Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to SAMAA podcast. Today we have a very special guest with us here. She is a symbol of bravery and courage. And yes, she is a true representative of 52% women in Pakistan. And yes, you heard it right. I'm talking about none other than Miss Sheharbano Naqvi, ASP Lahore. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Allah ka shukr. First of all, many congratulations. You're getting Quetta medal, police. So, how do you feel about it? Allah ka lakh shukr hai. God has been kind. मुझे तो ये बताइए कि जब ये एक वाक़या हुआ था, हॉरिबल वाक़या और इतनी क्योटिक सिचुएशन हुई इचरा में कुछ दिन पहले और फिर आपने बड़ी ब्रेवरी से उस खातून को रेस्क्यू किया, उसके बारे में बताएं प्लीज़. बेसिकली इंसिडेंट टुक प्लेस लास्ट संडे. उसमें हुआ ये था कि 1:30 के करीब हमें कॉल आती है कि एक खातून है, उसको मॉब ने सराउंड कर लिया एंड दे आर नाउज़ुबिल्लाह थिंकिंग दैट शी इज़ वेयरिंग अ शर्ट व्हिच हैज़ कुरानिक वर्सेस रिटन ऑन इट. तो देर आस्किंग हर टू रिमूव इट. वो कह रहे हैं कि कमीज़ उतार के चेंज करो, बुरखा पहनो. जी. और उसने रेजिस्ट किया है एंड शी इज़ विद हर हस्बैंड. ये सारा कुछ तो कॉल में नहीं था, लेकिन क्रक्स ये है, कॉल वाज एनोनिमस. सिर्फ इतनी थी कि मॉब है और ख़ातून जो है उसने कपड़े कुछ ऐसे पहने हुए हैं जो नाज़ेबा हैं और उससे सराउंड कर दिया गया. जो रिस्ट्रिक्शन जो बनती थी वो इचरा पुलिस स्टेशन की बनती थी और जो चौक था उसको हम पाकिस्तानी चौक कहते हैं. फॉर दोज हु बिन टू इचरा एंड फॉर दोज हु आर Lahoris, they would know that there are certain areas in Lahore, especially the ones which are जो old city के करीब हैं, they have very convoluted streets. Yes, तो बहुत पतली गलियाँ हैं. हाँ जी. Similarly, ये भी एक बाज़ार, it's a huge commercial hub. इचरा जो है furniture market भी है, cloth market भी है, curtains भी हैं, tiles भी हैं. तो ये वो area जहाँ cloth market लगती है. अच्छा, अब पाकिस्तानी चौक is like a 4 or 5 minutes walk away from the main Firozpur road, on which the entire bazaar is. तो उधर हम लोग जब पहुंचते हैं तो हमने मेन पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं और पैदल चलते हैं और पैदल चल के 4-5 मिनट बाद पहुंचते हैं. What we see later on is something that everybody already knows कि the mob had surrounded a shop जिसके दोनों shutters जो थे वो नीचे थे. The woman was huddled inside along with her husband and they were asking her to change the clothes. So slogans chant कर रहे थे, वो basically religiously charged थे. They wanted, justice to be meted out there and then. तो उस scenario में what we had to do was to pick the woman up and take her out. So when you were rescuing the lady, आपने पूरी क्राउड को कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए. फिर आप उस खातून के पास गई, तो जब आपने पहली बार उस खातून को देखा, उनके कपड़े देखे, तो उसको देखकर आपको कैसा लगा? क्योंकि वो इतने लोग नाराज़ हो रहे थे, तो आपने खुद से क्या एनालाइज किया? I think when ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, it's a very good question for future reference as well. मैं ये ऐड करूँगी कि when you're in such a situation where people have surrounded, for your safety as well and for anybody who's watching. Yes. When you're in such a situation where people either have surrounded you, God forbid, or have surrounded somebody else, do not argue with them. Do not tell them what is right and what is wrong. Right. Because had they been following what is right and what is wrong, that incident would not have taken place to begin with. Agreed. So you're dealing with an aggressive mob जो कि चार्ज है रिलीजियसली, या फिर वो सोशली भी हो सकता है या वो पोलिटिकली भी हो सकता है. उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैज़ रिड्यूस्ड एंड हैज़ दिस थ्रेशोल्ड हैज़ गॉन सो लो दैट दे वुड नॉट बी सिविल if they are told that they're wrong. Yes, you're right, absolutely right. उस सिचुएशन के अंदर मेरा अपना पर्सपेक्टिव जो भी था वो नहीं था. उस सिचुएशन में सिर्फ मुझे ये पता था कि आई एम एन ऑफिसर हु इज एंटरिंग अ सिचुएशन वेयर अ वुमन इज केप्ट अलोंग विद हर हस्बैंड. शी माइट बी किल्ड, समबडी माइट डू समथिंग टू द हस्बैंड एंड आई नीड टू टेक देम आउट. दैट वाज इट. दैट्स सो ट्रू. मुझे ये बताएं कि उस वक्त आपने उनको अबाया पहनवाया और फिर बाद से आप उनको लेके जा रही हैं. जी. तो वो रास्ता आपकी मतलब जो ऑफिसर सिक्योरिटी जो गाड़ी होती है वहाँ तक आपको लगा कि बीच में खुदा न खास्ता कोई खतरा हो सकता है, कोई आप पे हमला कर सकता है, तो उसकी कोई तैयारी थी? नहीं. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने पहले उसे बुरखा नहीं पहनाया. दिस इज़ वेयर इंटेलिजेंस कम्स इन दिस इज़ वेयर अ वुमन कमिंग एज अ पुलिस ऑफिसर, नॉट दैट आई वुड बी प्लेइंग द वुमन कार्ड एवर इन माई सर्विस, उसका पर्सपेक्टिव आ जाता है. अच्छा, पर्सपेक्टिव ये आता है कि देयर सर्टेन things that trigger a certain strata of our society as far as their perception of a woman goes. Okay, we'll talk about it at length because I've heard that you have one of the best podcasts going around in town. So this would be the brilliant platform to state these things. Thank you, much appreciated. For the people. अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि the first thing that I saw was that her hair are dyed. Yes. So we have associated certain perception with a certain kind of woman.
लड़की के बाल डाए हुए में, लड़की ये कपड़े पहनती है, लड़की ये लेती है सर पे नहीं लेती है, लड़की इस तरह चलती है, लड़की ये वैसी है, लड़की ऐसी है. तो आई वाज लाइक दिस इज अ ट्रिगर फॉर एन एंग्री मॉब. सो फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज वी टाइड हर हेयर. वो कहती वो मैंने अंदर एंटर हुई हूँ तो उसने कहा मुझे डर आ रही है, मुझे मार देंगे. मैंने कहा बाल बांधो, पोनी है ठीक है, मुझे मार देंगे. मैंने कहा हस्बैंड को हमने छोड़ना है, आपका हस्बैंड अलग होगा आपसे. कहती हस्बैंड को ना लेके जाए. मैंने कहा बाल बांधो. जी जी बिल्कुल. वी टाइड हर हेयर. देन वी सॉ कि अगर इसका कुर्ता लंबा है तो टखनों से नजर आएगा, तो दैट वुड एक्ट एज अनदर ट्रिगर. उसने बुरखा हमने पहना दी है, नीचे से कोई देखेगा और स्लोगन्स दोबारा शुरू हो जाएंगे, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, और उसे पढ़ जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, फिर व्हाट वी डिड वाज कि हमने उसकी शर्ट को अड़ूंगा दिया, इधर हमने उसको टाई किया. ठीक हो उसके बाद हमने उसको अबाया पहनाया, फिर उसका सर जो है उसके ऊपर चादर डाली. हस्बैंड को अलग किया, एक और SHO के हवाले किया, कहा जिस तरह ही खातून को बाहर लेके जाएंगे तुमने दूसरी तरफ से हस्बैंड को लेके निकल जाना है, क्योंकि अटेंशन सारी हमारी तरफ होगी. बिल्कुल. अदरवाइज वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके हस्बैंड पे भी निकाल सकते हैं. You never know. Yes. कि इसकी बीवी थी, इसने कुछ सिखाया Such a challenging अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ ये कि जब exacerbation of the event हुई है ना, later on I'm deviating, apologies for that. Exacerbation of जब event हुई है तो it primarily exacerbated because of a certain reason. जब हमारी बात हुई है उन लोगों से जो कि अब supposedly were the representatives of the mob, उन्होंने कहा जी खातून ने ये हरकतें की हैं, इस वजह से मतलब शी हैज़ कमिटेड अ रिलीजियस ऑफेंस. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं कि जी क्या हरकतें की हैं. मौक़िफ़ ये पेश किया गया कि खातून जो है उसने अंग्रेज़ी में हमसे बहस की है. उसने कहा है कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं कपड़े कौन से पहनूँ ना पहनूँ. मेरा शौहर मेरे साथ है, वो मुझे बताएगा मैं कपड़े कौन से पहनूँ और कौन से ना पहनूँ. और उसने कहा कि तुम खुदा हो जो तुम मुझे बताओगे कि मैं कपड़े कौन से पहनूं और कौन से कपड़े ना पहनूं. ठीक है. तो आगे से कहा कि उसने मुझे खुदा कह दिया. मैंने कहा भाई उसने तुम्हें खुदा नहीं कहा, उसने कहा कि तुम हो नाउजुबिल्ला 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 कि आप हैं जो बताएंगे. तो this is what exacerbated. So this is another perspective to the entire event, that we are so used to a submissive woman, that we are so used to an entity जिसको हम लोग जहाँ डंडा मारेंगे वो चली जाएगी, that it's really difficult for us to grapple with a woman who stands up for herself, is strong enough to say no, you cannot tell me what to do, you have no say, there are certain limits, you cannot cross or transgress those. अच्छा, इसका third aspect भी है, वो है कि why it exacerbated so much के अंदर कि इस तरह का similar event, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ इधर कि इस तरह का सिमिलर इवेंट 2 से 3 हफ्ते पहले हो चुका है इधर ही. एंड द पीपल हु वर द सपोज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मॉब फॉर सम ऑड रीजन एडमिटेड दैट दे हैव डन दिस बिफोर. उन्होंने कहा हम पहले भी तो ये कर चुके हैं, उन्हें तो कोई मसला नहीं हुआ, तो उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से अबाया उतार दिया. तो उस पर भी कैलीग्राफी हुई भी थी इसी तरह, उसने तो बड़े अच्छे तरीके से अबाया उतार दिया तो हमने उसको दूसरा अबाया पहना दिया था और वो माफ़ी मांग के चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ. तो हैड दैट वुमन रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट कि दिस इज हैपनिंग इन इचरा एंड पीपल आर डूइंग मॉरल पुलिसिंग एंड आर टेलिंग वुमन व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर इन वन ऑफ द लीडिंग कमर्शियल हब्स ऑफ द सिटी, ये इवेंट नहीं होना था. अगर वो पहले दफा अगर वो बेशक वहां से माजरत करके मसलियत के तहत चली गई थी, उसको चाहिए था कि पुलिस स्टेशन आती, रिपोर्ट करती इवेंट, तो ताकि पुलिस की नॉलेज में होता कि ये उनकी हदूद के अंदर हो रहा है. मोस्ट ऑफ द इश्यूज व्हिच अराइज इन आवर सोसाइटी, I wouldn't say they primarily rest upon the fact that the community is not helping, but I would definitely say that as a police officer we at times feel as if the community is reluctant to share information, and however such information needs to be shared. आप बिल्कुल ठीक बात करिए. अगर ये वाकया पहली दफ़ा ही ग्रिप में आ जाता तो ये दोबारा ना होता और इस पे अब जो एक्शन लिया गया वो पहले हो जाता. तो द क्राउड itself was so lenient कि उनको लगा कि it's a piece of cake, we can let anybody down and keep a woman submissive according to our points and reviews and opinions. Moving on further, जब मैं बात करती हूँ उन खातून की, तो एक वीडियो पे ट्रोल किया गया कि when she went to the police station, so आपने कहा था कि आपने तो नहीं, ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने माजरत का इज़हार किया कि आइंदा ये हरकत या जो भी वाक़या नहीं होगा. तो उस पर अब आपको यहाँ पे ट्रोल किया गया कि आपने खातून होकर दूसरी खातून से माफ़ी मंगवाई. सो हाउ वुड यू explain this situation? No, not that an explanation is due, but however, yeah. The thing is that whenever police intervenes, there are 3 grounds on the basis of which a police's intervention is required in any case. Yes. It could be political, it could be social, it could be religious. I'll start with the least important and then move on to the most important. Sure. The least important one is that कोई law and order situation ना create हो.
ठीक है, रोड ब्लॉक्स ना हो, सब कुछ ना हो. अच्छा, द सेकेंड इज़ कि कोई मटीरियल लॉस ना हो, कोई इकोनॉमिक लॉस ना हो. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती तो वुड हैव बीन रियली एम्बैरेसिंग बिकॉज PSL हो रहा था 3 or 4 kilometers अवे. अच्छा, इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट होती तो वुड हैव बीन रियली एम्बैरेसिंग बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ क्लॉथ्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ फर्नीचर एंड टाइल्स एंड एवरीथिंग एल्स इन लाहौर. थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कोई लाइफ की सैंक्टिटी, रिस्पेक्ट और ऑनर जो है वो डैमेज ना हो. खातून को थप्पड़ भी पड़ जाता ना उधर तो that would have been horrible. ठीक है, it would have been horrible. अच्छा, तो ये तीनों चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हम लोग इस बात पे आते हैं कि पुलिस स्टेशन में होना पुलिस वालों का कसूर बन गया उस वीडियो में कि they were sitting in a police station. Whatever was said and whatever was done was based on consent of both the parties. And what she, I don't know, I cannot speak on her behalf because हम लोगों ने, with my SHO standing right next to me, SHO Ishra, we talked about the fact कि ये सारा incident हुआ है and this is what the woman is going to say because this is what she decided to say before the video was shot. Okay. It was entirely based on consent and of both the parties. It should not have been. Somebody might say, sitting in their drawing room, that this should not have been done. But there are certain hard decisions that need to be taken because you cannot, however utopian your perspectives are on life, there are certain hard realities and harsh realities of life that you need to deal with. And there are certain dogmas and there are certain taboos in our society that haunt us till date. And we have had certain examples in which a very murky incidents have damaged our collective consciousness as a society. So we do not want a blotch on the collective consciousness of the society because we cannot under any circumstances protect the woman 24/7 in a way that if she's going to go pick up her children from school or drop her children to school or go to shop or go on a street and a lone person who is frustrated thinks that whatever happened that day was right, she was subjected to horrific behavior which was correct, might do something. Yes, you're right. So you have to take all the perspectives into account. Yes. And see the reality as it needs to be seen, and prudency demands not that I'm justifying something. Yes, obviously. Because whatever was said on with consent of both the parties and has nothing to do with the police. Yeah, and of course, absolutely nothing to do with the police. I'm just giving a perspective to a different. I'm just giving a different perspective and talking about the harsh realities of life and stating what needs to be stated and might not be stated by many people because it's harsh. कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में, ये चीज़ें हो सकती हैं. तो इन ल्यू ऑफ दैट जो हुआ जैसे हुआ इन रेट्रोस्पेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कह सकते हो कि गलत हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कह सकते हो कि सही हैं, लेकिन समथिंग वाज डन and the life of the woman is safe. She was reunited with the family. She did not want to pursue what happened. Obviously it's traumatic. Yes. And us dragging कि ये हुआ ये क्यों नहीं हुआ basically adds to the misery. No, you are perfectly right about this. And because hats off to the team, and especially when I talk about this, then it was a very wise decision to settle down the situation, which was quite chaotic at the time. And to, talk back was another triggering point as a catalyst. It could have, affected as a catalyst. मुझे ये बताएं कि when you were there as a team, so वहाँ पे डॉल्फिन भी थी, आपके बाकी पुलिस एहलकार भी थे, and I also had a podcast with your SP Irtaza Kumail, and he had been very nice, and अब आपकी भी बहुत तारीफ कर रहे थे, and obviously it was a team effort. तो आप बताएं कि आपकी टीम का कितना रोल था आपके साथ, because it's a whole team effort, and without a team you cannot step up to another step during this chaotic situation to it musters up your courage to take such step. Obviously everything and everybody plays a role. सबसे पहले जिस तरह 15 की कॉल चलती है तो पहला जो रिस्पॉन्डर होता है वो आपका होता है डॉल्फिन फोर्स. ठीक है, तो वो डॉल्फिन पहुंची. जी. ठीक है, उसके बाद हमारा SHO इचरा पहुंचा. फिर SHO जब इस तरह की सिचुएशन होती है, 3 तरह की जो कॉल्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. रिलीजियस ऑफेंस की, रोड ब्लॉक की, कि तो मॉब की के लोगों को घेर लिया, ये हो गया वो हो गया. अच्छा, तो उस सेंस के अंदर आप मुतलका जो SHOs हैं ना उन्हें भी बुला लेते हैं. तो SHO शाहरबान वाज प्रेजेंट एज वेल, देन SP साहब वाज देयर. सो बेसिकली हम लोगों ने इस सारी चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट ऐसे किया कि
the life of the woman is saved. Bottom line is that we were able to save the life of the woman. Yes, full stop. and it was ended and handled successfully. Thank and it's God. all obvious and transparent to everyone. मुझे ये बताएं कि recently आप मिली हैं आर्मी चीफ को और उन्होंने लिटरली ही पैटेड यू और उन्होंने आपके सर पे हाथ रख के प्यार और शफकत का भी इजहार किया और उन्होंने आपको और क्या क्या आपसे इस बारे में बात की है और किस तरह से उन्होंने आपको अप्रिसिएशन दिया ये बताएं. अल्लाह का शुक्र है. God has been very kind. Shukr alhamdulillah rabbil alameen. The overall experience was positive, and basically the bottom line was that women do play a huge role in the progress of the society and the success of the society, and they should continue to doing so. Yes, you're right. मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से शाही मेहमान बनने जा रही हैं एंड जो सऊदीया के सफारत खाना है वहाँ से भी the Foreign Affairs Ministry has also invited you to come there and pay your royal visit with the royal family. So how do you feel about it? His Excellency, the Ambassador of Saudi Arabia, was very, very kind, and His Excellency primarily focused on the role of women and how they're important in building a society which has larger contours attached to it, which are positive, better, healthier, Yes. and vibrant. So now I would like to ask a question that you have to give me one word to each personality. Okay. So I have 5 personalities and one Oh word my for them. God. First of all, it is Babar Azam. Basically, there's this picture which has gone viral when it comes to Babar Azam. People All think that I have a right. daughter. Okay. It wasn't my daughter. There was this girl during PSL who was crying and wanted to meet Babar Azam, and there were multiple girls who wanted his interviews. my God. तो हमने वो सारी चीजें collect करके and with the ठीक kid है. बाबर आजम के पास गए थे, interviews लिए, सारों के autographs लिए, बच्ची को मिलवाया और फिर That's वापस so आ गए cute. थे. मतलब आप तो- जो है symbol of bravery and courage and also जी. you know helping the cute little pretty girls in meeting their as a fans meeting their prominent celebs. That's great. मुझे ये पता है, so you don't have a daughter, right? No, I don't. So you have to clear this to the audience as well. I don't have a daughter. And there is also a picture of you viraled in a wedding dress. Yeah. So have you been married or not? Oh my God, I've gotten a picture viral. अच्छा, okay. Okay. Basically, There is, I निकाह don't know, हुआ है. किसी ने निकाह कहीं से हुआ ढूंढ है. निकाली है. निकाह हुआ है मेरा. ठीक है जी, thank you. मुझे ये बताएं one word for Shahid Afridi now. Shahid Afridi, Pepsi. Oh, I see. Imran Khan. World Cup 1992. Great. Maryam Nawaz Sharif. Women empowerment. And Shaheen Shah Afridi. Very fast. Nawaz Sharif. Very humble. All right. Now, when you were growing up, so what you have in heart and mind? कि आप क्या बनेंगे बड़े होके? क्या ambitions थे, क्या goals थे? कि would you be a police officer? शुरू में I wanted to become a judge. I wanted to join judiciary. With the passage of time, after coming across multiple people and how they interacted with the police department and how it impacted their lives, I decided that I'll join Police Service of Pakistan. So for how long it has been that you're serving as a police officer? I cleared the exam in 2019. Our training stretches to 1 year and a half. And उसके अंदर यूटीशिप का पीरियड भी होता है, सब कुछ होता है, तो तब से लेके अब तक we were serving as police officers. So is it a challenging job for women, for girls? Gender itself in entirety is a very subjective term. So if you let certain characteristics of your gender bring you down, or certain characteristics that the society has associated with your gender to play a role in how you're going to function as a human being, then yes, you'll have multiple challenges. However, if you're a completely professional person and use the very factors that they think are weaknesses as your strengths, you're one hell of an officer. That's great. मुझे ये बताया कि जब आप छोटी थी तो बचपन में डॉल्स के साथ खेलती थी या you had action figures या कुछ जैसे वो जो बेबी बॉयज होते हैं उस तरह के आपके खेल थे? क्या खेलती थी? मैं प्ले स्टेशन खेलती थी बहुत ज़्यादा. I see. ठीक है. Okay, I get और it. निंटेंडो होती थी, उसके अंदर वो सुपर मारियो होती थी उन दोनों के अंदर वो, और there was Sonic होती थी. ठीक है. So I was a video game buff. I used to be a kid जो आउटडोर्स में बहुत खेलता था. चोर सिपाही में मैं हमेशा चोर होती थी. और लेकिन अब आप सिपाही हैं. जहाँ तक डॉल्स का ताल्लुक है, in my entire life I've only had one Barbie doll which my khala brought from the US. It was नई ना उस टाइम African American Barbies आई थी. All right. So I was okay. like, I want an African American Barbie.
So mine was different as opposed to a blonde Barbie. So I used to have an African American Barbie and I used to flaunt it. तो ये story है. तो यानी कि बचपन से आपके शौक थे, जैसे कहते हैं ना वो लड़कों वाले शौक थे. I would say कि शौक थे. I wouldn't say कि लड़कों वाले थे या लड़कियों वाले थे. I would say शौक थी, and it's very important for all those who are watching कि let kids be kids. Let's not associate कि उसकी शौक जो हैं वो कैसे हैं. Let's not categorize gender based and customized. Let's just you know खेले दौड़े लड़की उतनी तेज जितना तेज लड़का दौड़ना चाहता है. चीखे मारे. मैं वालिद was like कि शुरू में I used to be like मैं ना I was a very शरारती बच्चा. तो कभी दरख्त पे चढ़ जाना, कभी छत से छलांग मार देनी and all that. तो एक दफ़ा रक्षा चल रहा था तो मैंने रक्षा से छलांग मार दी. कॉलोनी के अंदर ना we were coming back from school. क्या एज थी तब आपकी? I was in grade 1 or 2. So I was very rowdy. ठीक है. तो अब्बा was like कि ये जब इंसिडेंट हुआ है तो वो उसके बाद मैंने पूछा उनसे ना, we were going to Islamabad, we were heading to Islamabad and I asked him कि अब आपको क्या लगता है मेरी जो चीखें थी जो मैं बचपन में मारती थी वो मैं ठीक मारती थी या गलत? उसका फ़ायदा हो गया है ना? कहते हैं हो गया. मुझे ये बताएं कि जब आप उर्दू में बात करती हैं तो आप मैं की जगह हम का वर्ड यूज़ करती हैं, तो इससे कोई रेलिवेंस है? यूजुअली ये लखनऊ के लोग बोलते हैं. एनी बैकग्राउंड? No background whatsoever. A Punjabi through and through. The thing is कि it becomes very self-centered when you say कि मैंने ये किया. मैं हूँ, मैं उधर थी, मैं इधर थी, मैंने ये सोचा. मैं नहीं है. आपके पीछे एक बहुत बड़ी आपकी एक लंबी कहानी है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग के अंदर मदद की होगी, इन्फ्लुएंस किया होगा. बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, वाक़यात होंगे जो आपको जिन्होंने मुतासिर किया होगा, जिन्होंने बताया होगा किस तरह का बनना है. तो जब आप कुछ करते हैं या फिर आप कहीं होते हैं तो बेसिकली आप एक कलेक्टिव पूरी वो जो चीज़ है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. उस टाइम आप आपको नहीं, अपने आप को नहीं कर रहे. देयर इज़ नो सच थिंग, ओपिनियन है, नो सच थिंग इज़ अ सेल्फ मेड कि मैं ने ये बना दिया ना. तो वो फिर वरना तो फिर कुदरत सेल्फिश सा लगता है. और कुदरत जो है उसका बड़ा रोल है, वालिदैन का बहुत रोल है, लोग जो पसंद करते हैं उनका बहुत रोल है, जो लोग नहीं पसंद करते उनका बहुत रोल है, दोस्तों का बहुत रोल है, दुश्मनों का बहुत रोल है. तो हर तरह की you're a collective individual full of stories and adventures and incidents, so it's not just about you. So now there's a question. कभी आपको किसी ने कहा है कि आपकी किसी इंडियन सेलिब्रिटी से शक्ल मिलती है? अनुष्का शर्मा? बिल्कुल भी नहीं कहा मुझे किसी ने. So I'm just telling it to you that you somehow resemble Anushka Sharma. Oh my God. Yes, okay, but she's a beautiful woman. Yes. And a very strong personality that but you yourself is an epitome of beauty, and yes, you are the true representative of Pakistan, and we are proud and love to have you here. Thank you. And we just wish you best of luck. You fulfill and prosper and keep on making us proud and bringing change in Pakistan. And the last question with me is आप जब यूनिफॉर्म पहनती हैं, so when you get off with the uniform and get back to your normal clothes, तो do you get to the brands? Are you brand conscious या क्या करती है? Normal routine क्या है? जब हम लोग वापस पहुंचते हैं, जिस टाइम पे हम पहुंचते हैं, उस टाइम the only thing left to wear is a sleeping suit और pajamas, और वही होते हैं because we get home around 3 in the morning or 2 in the morning. Oh, I see. तो जिस तरह की हमारी रूटीन होती है, तो उसके बाद नहीं कुछ ऐसा नहीं, कुछ खास नहीं. हम I like the maximum that I can say is that my father is the one who primarily shops for us and me. I like his choice, and mostly it's anything that looks good. And when you're going to get married, so you are going to pursue a career, right? Yes. So your husband knows कि पुलिस में है मेरी wife, तो कभी भी ड्यूटी लग सकती है, and she is usually the alpha female जिसे कहते हैं ना. So is he ready with such choices? My husband is an absolutely amazing man who's very supportive and has a beautiful family who are very supportive and very open-minded, very, very protective, very it's a dream come true. Mashallah. We wish you best of luck for that as well. And also गाने का शौक है? Please, बिल्कुल भी before we wrap up the session, अपना कोई favorite song बता दें. No, बिल्कुल भी नहीं. कोई favorite singer? कोई फेवरेट सिंगर, मुझे नासिर काज़मी की गज़लें बहुत पसंद हैं. चलें, good. And thank you for being here. Thank you, Miss Sheharbano Naqvi, for giving us your precious time. I know you're quite occupied nowadays. यहाँ ये कहा जा सकता है कि नासिर काज़मी जो है वो गज़ल लिखते थे, सिंगर नहीं थे, तो हम तो सब्र खानम का नाम लेंगे. Very good. Thank you so much, and I just feel so great and glad that you became part of the SAMAA podcast and my guest here especially. Thank you once again, and please keep on making us proud. Wish you best of luck, and please keep on
giving such great gestures towards the betterment of Pakistan. Thank you. Thank you so much. Badi And mehrbani. also, best of luck for your visit to Saudi Arabia. Yes. Thank you. Thank you. Thank you guys for watching us today. Do not forget to share, like, and subscribe. And yes, here we go with our favorite guest. You had it today. So if you guys have any queries or any questions, please let us know in the comment section below down, because Miss Sheharbano Naqvi would directly answer you that. Stay tuned. Bye-bye.